आर्किटेक्चर के अंदर अगर कलर या यूज़ ऑफ कलर की बात की जाए तो इट इज़ ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी कॉम्पोजिशन of design. From Taj Mahal to Guggenheim to Getty Center, in all of these buildings, the use of color जो है वो building के final design के साथ बहुत synonymous रहा है. In terms of Guggenheim तो जो singular use of material, in Taj Mahal also singular use of material, and then obviously in Getty Center the use of white against green has been a very important aspects of the design. And I still remember the first time I saw Habib Fida Ali's Shell headquarters in Karachi, and the use of concrete in that building was very, very well done. And it stands very beautifully in the climate of Karachi. So this singular use of color हमने अपने projects के अंदर बहुत explore किया है, जिसकी कुछ examples हैं TVC, Infinity Salon, and then MN Restaurant. In Infinity Salon, it's basically a very feminine space in its truest essence. So in order to highlight the feminine aspect of it, we designed all of that space as a very monochromatic background. So that product, makeup, or whatever the activity which is happening in the space should be highlighted. अगर TBC की बात की जाए तो इट्स बेसिकली अ बर्गर जॉइंट, जिसके अंदर फूड और लोगों को हाईलाइट करने के लिए जो बाकी सारा स्पेस है उसको बहुत मोनोक्रोम के अंदर डिज़ाइन किया गया था और सारे के सारे सर्फेसेस को मल्टीपल तरीके से देखा गया था. कुछ सर्फेसेस वर मैट, देन देयर इज रॉ कॉन्क्रीट, देन देयर आर स्टेनलेस स्टील counters which act in harmony in order to highlight the activity in the space. M&A restaurant is then again a very extreme example of use of color where we used pink color predominantly and in the interior and in the exterior, and it stands very like a very different piece in the urban setting. Usually जब भी सिटी को परसीव किया जाता है, it's always concrete, glass, metal surfaces, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारा सिटी जो है वो एक बहुत मेल परस्पेक्टिव से जनरेट हुआ है, तो उसके बीच में जब भी एक स्प्लैश ऑफ कलर आता है तो इट एड्स अ सर्टेन वाइब्रेंसी in the space. So color has been a deriving force behind different style of architectures also. अगर classical architecture की बात की जाए तो ताज महल is a very good example of singular use of color. Modernism की बात की जाए तो Le Corbusier has explored this in a very beautiful manner. अगर contemporary times की बात की जाए तो ब्रिटेन के अंदर और बहुत सारी ब्रूटलिस्ट मूवमेंट्स के अंदर हमने देखा है कि कैसे एक सिंगुलर यूज़ ऑफ कलर, सिंगुलर यूज़ ऑफ मटेरियल से पूरे के पूरे आर्किटेक्चर को जो है वो कंपोज किया जाता है. कार्लर हैज़ रिटन अ वेरी ब्यूटीफुल बुक अबाउट अ रॉ कॉन्क्रीट, जिसके अंदर उसने डॉक्यूमेंट किया है कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश टाइम्स का ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर. द यूज़ ऑफ specific color or use of multiple color or even absence of color also demarks the idea behind that specific project. So for more content around architecture and design, do subscribe to our channel. Thank you.